Hello everyone, this side Priya Bhatia, and in this particular video we will talk about linear regression algorithm in machine learning. So yes, we are continuing our machine learning playlist. If you remember, in the last video we have talked about what is machine learning, why it is required, in what various fields this machine learning algorithms are being used nowadays, right? Now, before continuing this session, I really want to make one request that please watch the videos until the very end. The videos might be long because the videos will composed of three things. The very first thing, I'll talk about what the algorithm is all about. What is that algorithm meaning? Second thing, I'll talk about the mathematical intuition of every algorithm, which plays a very important role in understanding any of the machine learning algorithm. So, what I have observed from past few years, I would say, when I entered this industry, people don't know the machine learning mathematical intuition algorithms. Means they know how we can implement, they know how we can import the sklearn packages, but what they are lagging is the mathematical intuition behind those algorithms. And believe me, whenever you are going for any interview, whenever you are doing any of the project, these intuitions, these mathematics plays a very important role. I would say, as a beginner, if you are starting the journey of machine learning, please don't say that okay, these stuffs are not important because I know the implementation, I can build the stuffs, that's okay. In research, if your focus is on research, then though it is mandatory. If you are not having that mathematical idea, you can't do research over these domains, right? So please watch the video till the end. The second portion of this videos, we will cover up the mathematical intuition, as I said, and at the very end, I'll talk about the implementation, because just knowing the mathematical intuition or the theoretical idea behind every algorithm will also not work, right? So we should know both of the aspects. We should know the mathematical intuition, we should know the implementation as well. So I will cover up in one shot for every algorithm these three components for every particular video that you will see in future as well. So please make sure to stay tuned. Please make sure to learn as much as you can, and please make sure to ask your queries or questions in the comment section. See, it's not about that what you have learned. It's always about what you have asked. हमें बचपन से सिखाया जाता है कि क्वेश्चंस नहीं पूछने का है, राइट? क्वेश्चंस नहीं पूछने का है, बस समझने का है. बट जितने आप क्वेश्चंस पूछोगे मुझसे, उतनी नॉलेज मेरी भी बढ़ेगी, क्योंकि I know that stuff or I should not know that stuff. So what I will do, if I don't know, I will do the research. So please make sure to ask your queries, whatever you have, in the comment section, and do share these videos as much as you can. And please make sure to subscribe the channel as well, because it really helps me to reach to a wider audience, which I really need. Okay, so with this note, let's get started. Our very first fundamental algorithm, linear regression, in this video. And now, as the name suggests, right, regression, you can clearly observe that whenever we are talking about machine learning, we can solve either the regression problem or the classification problem. Regression meaning कि हमें एक continuous value को predict करना है. For example, मुझे house price को predict करना है. I think the same thing I have talked about in the previous video as well. तो एक सीरीज में वीडियो को सुनना, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. तो रिग्रेशन का मतलब क्या है कि मेरे को एक हाउस प्राइस की प्रिडिक्शन करनी है, जो कि एक कॉन्टिन्यूअस वैल्यू है. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि मेरे पास क्लासेस दे रखी हैं और मुझे प्रेडिक्ट करना है कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा. So whenever I am talking about linear regression, what I am saying is that this algorithm will help us to solve a regression kind of a problem. Now, how will it solve? What's the intuition behind that? Right? How will it do the actual things whenever we are calling this kind of a model? All these things now we will try to study and understand. So let's get started. So whenever we are talking about linear regression concept, right, we have to take care of, as I already talked about in the introductory of the video, that it usually solves a regression problem, right? What is a regression problem? I hope everyone knows.
that in machine learning, we will be having in supervised machine learning techniques two different types of problem. One is regression, another one is classification. So regression का मतलब क्या है कि if I want to predict something continuous value, right? For example, house price prediction. So at the very end of the video, I will try to demonstrate you the implementation also with respect to the house price prediction only. ठीक है? Now, let's try to understand, okay, we got the idea that it is a regression problem, we are trying to solve it, but how it will work, internally. What's the mathematical intuition behind that? How this linear regression algorithm, which is the fundamental algorithm in machine learning, works. Okay, please try to understand the concept behind this very consciously. For example, I will be having a data. Maybe you can consider that we will be having x, and on the basis of that x, we are predicting the continuous value y. And there are several data points that I have. For example, this is the kind of a data point that I have. You can clearly see on my blackboard what I am writing here. Okay. Now, what I really want is, I want to find a best fit line which basically fits this kind of data points that I have. So maybe this, I will say, is the best fit line. But how will I be able to find out, or how will I able to say, because there can be multiple lines which can be formed, right? There can be multiple lines which can be formed. तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो रेड वाली लाइन है वो बेस्ट फिट लाइन है? How will I get to know? So for that, you should know what is the equation of line. अब हमने lower classes में line की equation के बारे में पढ़ा है. I hope everyone knows here. So we all know that equation of line is nothing but y is equals to mx plus c. तो बेसिकली इस इक्वेशन को तो मुझे जनरलाइज करना है अपने डेटा पॉइंट्स के हिसाब से. जब भी हम बोलते हैं कि मॉडल इज ट्रेनिंग, वी आर ट्रेनिंग आवर लीनियर रिग्रेशन मॉडल, द इंटरनल आइडिया इज व्हाट वी आर सेइंग इज, इन अ वे वी आर सेइंग दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ m and c विच बेस्ट फिट्स माई लाइन. हमेशा याद रखना इस चीज को. जब भी हम बोल रहे हैं कि मैं लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन कर रही हूं, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मैं m और c की वैल्यू निकालना चाह रही हूं. What can be the optimal value of m and c for which my error will be minimum? I will talk about what is the meaning of an error. I hope कुछ लोगों को आइडिया लग गया होगा. तो अब अपनी पूरी कहानी जो है लीनियर रिग्रेशन की, वो इस लाइन पे जाके रुक जाती है कि मैं बेस्ट लाइन कैसे निकालूं आउट ऑफ द अवेलेबल लाइंस, आउट ऑफ all those lines. How will I able to get a best fit line here? ठीक है, y is equals to mx plus c. इसके लिए हमारे पास पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट आता है, that is about the finding a optimal value of m and c. So what will happen is, initially there can be a random initialization of m and c based on the data points that you have. But after some point of time, there is a concept of optimizers which will come into picture. There is a concept of optimizers which will come into picture. तो होगा क्या? Who will tell me what is the slope is all about? ये किसका slope है? मुझसे ढंग से बन नहीं रहा है, but I'm trying my level best. What is the slope is all about? What is the slope is all about? Have you seen this slope in your 11th, 12th classes? I hope everyone has seen. Can I say that this is the slope of a parabola? This is the slope of a parabola. What is the equation of a parabola? The equation is y is equals to x square. So if I will give you the value of x, you can determine the value of y. Maybe 1, 2, 3. So the value will be 1, 4 and 9 and so on. तो अगर मान लो मेरे पास एरर एक मोमेंट पे जब मैं मॉडल को ट्रेन कर रही हूं, what is the meaning of error? Let's talk about this first, then we will again come back to optimizers. एरर का मतलब क्या है? मान लो आपने एक बेस्ट फिट लाइन निकाल ली. अब होगा क्या कि सपोज एक नया डेटा पॉइंट आया, ये x है, ये y है ना? y कैप मैं बोलूंगी. y कैप की वैल्यू क्या है? mx प्लस c. अब क्योंकि हम यहां पर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, राइट? दिस इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड supervised machine learning algorithm.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि हमारे पास ट्रेनिंग डेटा में जो टारगेट वैल्यू है वो अवेलेबल है, राइट? अगर मेरे पास टारगेट वैल्यू अवेलेबल है मतलब कि एक्चुअल वाई भी अवेलेबल है। और वाई कैप कैसे निकालूंगी? मेरे पास बेस्ट फिट लाइन रखी हुई है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस बेस्ट फिट लाइन के अंदर वाई क्या होगा? आप बोलोगे कि ये तो वाई है जो कि एक्चुअल पॉइंट आपको दिख रहा है, और ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला वाई कैप है जो कि मुझे लाइन से मिला, क्योंकि लाइन यहां टच करी तो कॉरस्पॉन्ड टू दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई कैप. The difference between the actual value and the predicted value is something that we are saying as error, right? Error का मतलब क्या होता है? Error का मतलब ये है कि मेरी actual value जो थी, जो मेरे पास available है डेटा सेट के अंदर, उससे मेरी prediction कितनी दूर है. So in other words, I can say this is simply the difference between the value of y and the value of y cap. So y is nothing but is the actual prediction. और y cap क्या है? y cap का मतलब है actual data, I should say actual data और actual target value. और y cap का मतलब क्या है? predicted target value, predicted target value और प्रिडिक्टेड डेटा जो मेरे को मॉडल से मिला, लीनियर रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन करके मिला. अब ऑब्वियसली कई बार क्या होगा कि ये वाई कैप नीचे भी हो सकता है ना? मान लेते हैं किसी पॉइंट के लिए ये मेरे पास y है और यहाँ पे भी चलो ऊपर ही आ रहा है, ये मेरे पास y है और ये मेरे पास y कैप है. तो y कैप माइनस y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जब हम y माइनस y कैप करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी. तो इस नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर को हटाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अप्लाई अ स्क्वायर ऑफ दिस, एंड ऑब्वियसली वी नीड टू फाइंड आउट द एरर फॉर ऑल द डेटा पॉइंट्स दैट आई हैव. तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे n डेटा पॉइंट्स हैं तो मुझे सबका एरर निकालना है. i इज इक्वल्स टू 1 to n y माइनस y कैप होल स्क्वायर. ठीक है, ओके, आई बिलीव इट इज फाइन टू एवरीवन. अब होगा क्या कि मान लेते हैं कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू m और c के लिए, जिसकी इक्वेशन आपको बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में y कैप इज इक्वल्स टू बीटा 1 x प्लस बीटा 0 भी मिल जाएगी. अगेन सबको पता होगा यहाँ पे m जो है या बीटा 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, और यहीं पे बीटा 0 या c जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेप्ट को. इंटरसेप्ट को स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का सिंपल सा मतलब अगर देखो तो स्लोप का मतलब होता है कि किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर अगर मैं x को थोड़ा सा स्टेप बढ़ाती हूं तो y में कितना चेंज आ रहा है. इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ x, सो आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस x1 to x2 which I am saying as delta x. So how much value of y is changing, which is y1 and y2, the delta y. That's why if you remember in our lower classes we used to find out the value of a slope which is m as delta y divided by delta x. What is intercept? The difference. For example, here it is 0, but here it is having some significant value which is c. तो आई होप ये पार्ट तो सबको पता होगा, बट एक बार के लिए मैंने जिनको आइडिया नहीं है बता दिया है कि m और c का मतलब यहाँ पे क्या है. तो कहने का मतलब ये हुआ कि दिस इज समथिंग दैट वी हैव इज एन एरर, एंड व्हाट वी वांट इज वी वांट आवर मॉडल टू हैव मिनिमम एरर. तो हमारा टारगेट क्या होगा? हमारी जो फाइनल m और c की वैल्यू होगी वो क्या होगी? जिसमें एरर क्या होगा? मिनिमम होगा. सो व्हाट वी वांट इज वी वांट अ मिनिमम एरर. इसको हम रेजिडुअल भी बोलते हैं, एरर भी बोलते हैं, बहुत डिफरेंट टर्म्स आप सुन सकते हो. So what we want is our ultimate goal whenever we are saying that we are training our model in such a way कि हमें एरर कम मिल जाए, और उस कम एरर में m और c की वैल्यू क्या है वो हमारी फाइनल बेस्ट फिट लाइन बनती है. आई होप इंट्यूशन तो समझ में आ गया होगा कि इंट्यूशन क्या है अब. ठीक है, तो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है टू फाइंड द मिनिमम एरर, और इसी को ही अदर वर्ड्स में बोल सकते हो कि मुझे ग्लोबल मिनिमा निकालना है. नीचे वाले ग्राफ में जो पैराबोला है उसमें मुझे ग्लोबल मिनिमा चाहिए. इस पॉइंट को ग्लोबल मिनिमा पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट को जो मैंने ऑरेंज से मार्क किया. तो हो सकता है कि मेरे एरर की वैल्यू इनिशियली ये हो, मुझे रिड्यूस करके बार बार एक ऐसे स्टेप पे चढ़ना है
जहां पे मेरे एरर की वैल्यू जो है वो मिनिमम हो जाए। मे बी मैं यहाँ गई, यहाँ पे आए, यहाँ गई, यहाँ पे आए, यहाँ गई, यहाँ पे आए, बट मुझे यहाँ पे जाना है जहां पे एरर ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाए। राइट, आई होप यू विल बी एबल टू गेट माई पॉइंट। तो इस पॉइंट पे जहां पे मेरे मेरे एरर की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के इक्वल है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। क्योंकि अगर मुझे वो मिल गया तो ऑटोमेटिकली मुझे जो वैल्यू है वाई कैप की वो भी मिल जाएगी। आई होप एवरीवन एग्रीज विद मी। In that way, we will be easily able to get what is the value of M and C, right? So we will be easily able to find out the value of Y cap in that way. Perfect. Now you can ask me a question that how we keep on decreasing this error. हम इस error को decrease कैसे करेंगे? तो अभी आपने देखा कि error हम कैसे निकाल रहे हैं। error हम निकाल रहे हैं, difference कर रहे हैं हम y minus y cap का whole square summation of I is equals to 1 to n, जहां पे n इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स को। परफेक्ट। तो यहाँ पे y कैप क्या है, ये मेरे पास एरर है आप बोल सकते हो। y कैप का मतलब क्या है, y कैप का मतलब सबको पता है, इट इज नथिंग बट y कैप इज mx प्लस c का होल स्क्वायर। अब कहीं पे बीटा 1x प्लस बीटा 0 भी दिखेगा तो यू कैन कोरिलेट, इट्स वन एंड द सेम थिंग। नाउ when I'm saying that you need to calculate at each and every point a new m and a new c, and then you need to calculate again the error value, how will you calculate the value of new m and new c? That's what I am saying. The formula is the new m, the new slope is what is the value of an old slope that you are having minus eta. This indicates a learning rate. This indicates a learning rate delta of em. What does that mean? कि डेरिवेटिव क्या है एरर का m के विद रिस्पेक्ट। सिमिलरली आपको c की वैल्यू कैसे मिलेगी? यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c बाय सेइंग c ओल्ड माइनस ईटा ऑफ डेल्टा e बाय डेल्टा c। मतलब कि यहां पे मैं डेरिवेटिव निकाल रही हूं e का विद रिस्पेक्ट टू m। कैसे मिलेगा? ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मिनिमम एरर चाहिए, मिनिमम एरर चाहिए। तो हर बार हम m और c की वैल्यू को अपडेट करेंगे, एरर निकालेंगे, और एट ईच एंड एवरी आइटरेशन यू विल ऑब्जर्व that our error keeps on reducing and we will reach to a point which we call as global minima. What is global minima? This is something which I am saying in other words as global minima. There is a concept of global and local minima as well, but as of now I am not going into that much depth. But yeah, this is something which I am calling as a global minima. यहाँ पे मुझे पहुँचना है, ठीक है। अब आप लोग पूछोगे डेल्टा ई बाय डेल्टा एम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, आई होप सबको पता होगा डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूं, इट इज समथिंग विच इज इक्वल्स टू a minus b whole square. You can consider this as a, this as b. So it is a square plus b square minus 2ab, right? Minus 2ab. You can calculate, right? Now if I'll just open this thing, you will be able to get I to n y square plus, again you can open this bracket because it is a plus b whole square again. So it will be m square x square plus c square plus 2mxc minus 2mxy minus 2cy. You can check the calculation once again, but I believe this is something we will be able to get, right? तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना इज वेरी सिंपल, राइट? अगर मैं बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ e विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ m, यू विल इजिली से इट विल बी, क्योंकि हम m के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 0 प्लस 2mx स्क्वायर प्लस अगेन 0 प्लस 2x माइनस 2xy माइनस अगेन 0, क्योंकि हम m के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगी। आई होप सबको पता है डेरिवेटिव अगर मैं बोलूं, बताओ अगर y की वैल्यू x स्क्वायर के इक्वल है तो डेरिवेटिव ऑफ y x के विद रिस्पेक्ट कितना होगा? 2x, राइट? पावर आगे आ जाएगी और पावर में -1 कर देंगे। अब प्लस 1 माइनस y, लेट्स चेक द कैलकुलेशन वंस अगेन। y स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू mx प्लस c, दिस इज फाइन। कैलकुलेशन एक बार वेरीफाई कर रही हूं मैं, आप लोग भी कर लेना एट योर एंड।
this will be a plus b whole square, so it will be a square, which is m square plus x square plus c square plus 2 into a into b, so it will be mxc, not mx, okay, minus 2mxy minus 2cy. perfect. सो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2xc हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2xy हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल वैल्यू जो होगा दैट विल बी प्लस सी, m प्लस सी माइनस वैल्यू ऑफ y. तो अगर मुझे मिनिमम एरर निकालना है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल इक्वेट दिस वैल्यू विद इक्वल टू 0 एंड देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, राइट. सिमिलरली अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ e विद रिस्पेक्ट टू c निकालना है तो आई होप यू कैन कैलकुलेट एट योर होम. c के विद रिस्पेक्ट ऊपर वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव क्या होगा? अगेन यू कैन से, सो ऑब्वियसली इट विल बी समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n. अगेन इट विल बी समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n, right? So it will be again 0. I'm doing it fastly. You can try it your home a bit slower and then verify whether the results are correct or not. I'm just doing directly the derivative. It will be 2c plus it will be 2mx. okay, आगे क्या आ रहा है? माइनस 2mxy 0 हो जाएगा, माइनस 2y. सो मेरे अकॉर्डिंग इट विल बी 2c प्लस 2mx माइनस 2y. तो यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन आ रहा है, c प्लस mx माइनस y इक्वेशन हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू अगेन समेशन तो आएगा ही, इक्वल्स टू i इक्वल्स टू 1 to n derivative of e with respect to c. So now there are two variables and you will be having two equations. So with the help of that, you will be easily able to find out what is the value of m and c you will be able to get with respect to the derivative of e with respect to m and with respect to c. You are having different equations for both of them. Again, I am saying equations might be somewhere I did derivative wrong. You can try at your home. I did bit fast, okay, because I am recording the video. So here, now you can see you will be able to get, so you will be having this value of del of e by del of m. I just shown you how will you evaluate. You will be having a value of del e by del c. I have just shown how will you evaluate. This is something which is a learning rate. What this indicates? See, हर बार हम एरर को डिक्रीज कर रहे हैं. अब लर्निंग रेट क्या करता है? वो बोलता है कि कितने रेट से आपको इस एरर को डिक्रीज करना है. अगर आपने लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो हो सकता है कि आपको ग्लोबल मिनिमा मिले ही ना. और अगर बहुत धीरे धीरे रखा, बहुत कम रखा वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत टाइम लगेगा ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचने के लिए. एक सिंपल सा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ. मैं इसको ग्राफ को थोड़ा उल्टा कर देती हूँ, ठीक है. इस ग्राफ को मैं उल्टा कर देती हूँ, इस पैराबोला को मैं ऐसा बनाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मुझे इस पीक पे जाना है, ठीक है. अब आप लोग ये बोलोगे, आप लोग क्या सजेस्ट करोगे? आप लोग ये बोलोगे कि बहुत धीरे धीरे चलो ताकि तुम पीक पे पहुंच जाओ. तो ऑब्वियसली जब मैं धीरे धीरे चलूंगी तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा उस पीक तक जाने के लिए. या आप ये बोलोगे कि एकदम से भाग भाग के चलो, राइट. ऑब्वियसली मैं जल्दी थक जाऊंगी और हो सकता है कि मैं भागूं तो मैं उस पॉइंट पे पहुंच ही ना पाऊं, मैं उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाऊं, राइट. यही सेम चीज लर्निंग रेट के साथ भी है. तो हमें लर्निंग रेट एक हाइपर पैरामीटर है जिसको सोच के रखना पड़ेगा कि क्या हम ऐसा वैल्यू रखें जो ना ही तो ज्यादा हो, ना ही कम हो, ना ही बड़ी वैल्यू हो, ना ही बहुत छोटी वैल्यू हो, ठीक है. अब यहाँ पे लर्निंग रेट डिटरमाइन करेगा कि कितने पेस से आपका एरर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है. ऑब्वियसली दैट शुड बी समथिंग वेयर योर वैल्यू विल बी रनिंग एट अ पेस जो कि ना ज्यादा बड़ी हो, ना ज्यादा फास्ट हो, ना ज्यादा स्लो हो, राइट. सो दैट इज समथिंग विच यू विल बी एबल टू गेट एज अ लर्निंग रेट. और एंड एम क्या है? पुरानी जो वैल्यू है एम की, इनिशियली रैंडम इनिशियलाइजेशन होगा और उसके बाद हर बार आप लोग एरर के हिसाब से एम और सी की वैल्यू को अपडेट करते रहोगे. आप लोग का मतलब है हमारा मॉडल. तो जब भी हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल कॉल करते हैं तो जो टाइम वो ले रहा है ना, वो टाइम ले रहा है उस एम और सी की वैल्यू निकालने के लिए. सो व्हेनेवर यू आर सेइंग दैट यू आर ट्रेनिंग एनी लीनियर रिग्रेशन मॉडल, internally your meaning is that you are trying to train a model in a way that error will be minimum and you will try to find out the optimal value of this slope, the coefficient and the intercept. अब लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम के बारे में हमने समझ लिया, बट क्या ये एल्गोरिथम हर एक डेटा के लिए लगेगा? ठीक है, वो मैंने बता दिया कि रिग्रेशन टास्क होना चाहिए, इट मीन्स टारगेट जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और ऑब्वियसली सुपरवाइज है तो हमारे पास टारगेट वैल्यू भी होनी चाहिए, दैट्स फाइन.
But there are some sort of conditions that linear regression algorithm says. पहली कंडीशन कि जो हमारे पास इनपुट फीचर्स हैं, जो हमारे पास इनपुट फीचर्स हैं और जो आपके पास टारगेट वैल्यू है y, इनपुट फीचर्स एंड आई वुड से and the target value that you have, they both shows a linear relationship. They both shows a linear relationship. तभी आप लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को लगा सकते हो. अगर इनके बीच में नॉन लिनियरिटी होगी तो नहीं लग सकता. सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट you will be having a variance. अब वेरियंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये सब मैंने स्टैट्स प्लेलिस्ट में कवर अप किया हुआ है. अब हमें पता है एरर क्या होता है, राइट? एरर इज नथिंग बट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ y एंड द y कैप. तो जब आप वेरियंस निकालोगे रेजिडुअल्स का, सो वेरियंस ऑफ all the residuals that you will calculate should be constant. Residuals, variance of the residuals should be constant. और इसी प्रॉपर्टी को we call it as heterosidicity. Might be homoscedicity, might be my spelling is wrong, so I am just taking it from what I have written. So this property is something that we called as homoscedicity, and this can be asked in an interview from you कि क्या लीनियर रिग्रेशन सबके पास लग जाता है? तो योर आंसर शुड बी नहीं. तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी लीनियर रिग्रेशन लगाने के लिए? तो पहली क्या बताई? लीनियर रिलेशनशिप. दूसरी क्या बताई? होमोसिडेसिटी. तीसरा नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी होना चाहिए किसमें? रेजिडुअल्स में. नॉर्मेलिटी. सो रेजिडुअल्स मीनिंग the error that you will be able to get, that should be having a normal relationship, should form a normal graph or normal distribution, I should say. That should have a normal distribution. अब कैसे चेक करते हैं कि कोई भी डेटा पॉइंट जो भी मैं आपको दूं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं? हाउ विल यू check it out? In stats there is a concept of QQ plot. QQ plot, जिसको हम क्वांटाइल प्लॉट भी बोलते हैं. आई एम नॉट श्योर दैट आई हैव कवर्ड अप दिस इन स्टार्स प्लेलिस्ट और नॉट. आई विल चेक इट आउट. इफ आई हैव नॉट कवर्ड अप एंड इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट एज वेल, डू लेट मी नो. आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस प्लॉट एज वेल. ठीक है, उससे हम चेक कर सकते हैं. अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी इज द इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस मीनिंग दैट whatever be the observations you will be able to get, whatever be the observations that you will be able to get, they are independent to each other. They should be independent to each other. Independent means कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए. अब कोरिलेशन क्या होता है? स्टैट्स प्लेलिस्ट को रेफर करना पड़ेगा. इसीलिए मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने से पहले I have already covered up the stats playlist because I know I will again and again in algorithms refer that stats concepts, and then you can't say to me that you don't know. And if you will say to me I have a video to talk about that, you can refer that video. ठीक है, ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट होने चाहिए. अब इंडिपेंडेंट कैसे चेक कर सकते हैं? कोरिलेशन है या नहीं. कोरिलेट, अगर कोई वैल्यूज कोरिलेटेड है मतलब कि मल्टी कोलिनेटिविटी है उसके अंदर, तो उसको चेक करते हैं VIF से. ओके, अगेन डिफरेंट टॉपिक, बट आई एम जस्ट गिविंग यू जिस्ट सो दैट इफ यू वांट यू कैन आल्सो ट्राई टू एक्सप्लोर ऑन योर ओन. ठीक है, ओके, परफेक्ट. अगेन द फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो भी रेजिडुअल्स आप निकाल रहे हो या फिर जो एरर टर्म्स आपके आ रहे हैं, दे शुड नॉट बी कोरिलेटेड. दे शुड नॉट बी कोरिलेटेड. दे शुड नॉट बी नॉट कोरिलेटेड. Again, a very important thing. Sixth important thing is, mean of all the errors that you are getting or the residuals that you are getting should be equal to 0. Mean 0 hona chahiye. And the last point is that whatever be the input features that you have and the residuals that you have, they are also not at all correlated. And the residuals that you have, they are also not correlated. Again,
these are the properties that we have. These are the important conditions, you can say, or the properties, you can say, for applying linear regression algorithm. Linear regression algorithm. Very, very important thing. So if your data set doesn't follow these properties, you can't apply. ठीक है? परफेक्ट. तो हमने क्या देखा अभी तक? हमने देखा लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, हमने ये समझा कि मैथमेटिकल इंट्यूशन क्या है, हमने ये भी देख लिया कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमें टेक केयर करनी है बिफोर अप्लाइंग अ लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम. The last part of the video is about the implementation. And for that, what I can do is, I can again open one collab file. Okay. So I can again open one collab file, and then I'll try to talk about the implementation of linear regression algorithm. I can open a new notebook, and now I can show you the implementation part. Perfect. So I hope that until so far, whatever things I have covered up is pretty much clear to everyone. So now, here if you will observe, let me first of all rename this as linear regression implementation, and let me try to connect this particular file with my Google Drive where the dataset is available. Very simple, not that much difficult. If you will observe, machine learning algorithms are simple to implement, but it's somewhat difficult to understand the mathematical intuition. And that's why I am again and again giving the importance to that point. So let me just mount it up. I believe it will be done within a few seconds. Meanwhile, we can import the important libraries, pandas as PD, import numpy as np, import, I'm not sure whether I will use or not, I'm just importing matplotlib.pyplot as plt. I'm not sure whether I will use, let's see. Okay. So here drive is there. In my drive, I will be having YouTube sessions, and inside that I will be having linear regression data set, and again I will be having the USA housing.csv file. Now I can read this data for you all first of all, so that you can see the data, read_csv, and here I can copy the path. And now what I can do is I can show you the data, maybe the topmost 5 records which we have. Again, the EDA task I am not doing. My focus is just to talk about the linear regression implementation. But still, if someone is really want to see that how the EDA is being done, I have already created a separate video for EDA, which is there in the stats playlist. You can refer that. I will attach in the description of this video as well. And any of the stats concept which I am talking about in the video, it's already been done in the stats playlist. So if there is someone who is directly watching these videos and doesn't have any idea about statistics, they will definitely face the issue in terms of understanding the concept. Okay. So let's get started. Here you can see that we will be having average area income, house age, number of rooms, number of bedrooms, and so on. The final thing is the price, which is really I want to predict. So what I can do here is I'll try to, maybe I'm directly jumping towards the X and Y part. What I will do is I'll take the X as the input feature, which is average area income, house age, number of rooms, number of bedrooms, and area population, and Y I am taking as a price for the data. Now it's done. If you will see here, we will be having population, and then we will be having the age, number of rooms, and the number of bedrooms. You can see that there is a huge difference between the numbers. If I'll show you also, see the population number and see the number of bedrooms number. This can cause a biasness in my model. In order to avoid that, it's good to do the standardization by using either min-max scalar or by using a standard scalar. So how we can do that? It's a kind of a EDA process, but still I am doing here. It's a pre-processing part. sklearn.preprocessing. I will import something called as standard scalar. And what I will do is I'll say scalar is equals to standard scalar in order to scale my values within some limited range, right? I hope everyone knows what is the difference between
standard scalar, min-max scalar. For those who don't know, please check it out. It's a very vastly asked interview question again. Whenever I am doing a normalization using standard scalar, it is converting my values in a standard normal form. Mu is 0, sigma is 1, right? When I am doing min-max scalar, it is taking a minimum value and the maximum value and trying to limit the values, all the data points in a minimum and the maximum range. So when I am saying exit train, so what I am doing here is I am trying to pass my training data, but I have not splitted my training data. So what I can do is in the above part, I can say from sklearn dot model underscore selection. What I can do here is I can import a train test split first. Now these steps which I am doing now, this you will observe is similar to all the algorithms whichever I will implement, right? So now what I can do here is I can take X train, I can take X test, I can take Y train, and I can take Y test. I can take Y test. And here I can say train, test, split, and after that I can do X split, I can do X comma Y. And if you want, you can define a test underscore size in the random underscore state. Test underscore size will define what is the test size proportion you really want to take. Random state will define that whether you want at every iteration same set of training and testing data or not. Maybe I'm not defining as of now. Let's run it. Okay. Now I have defined X underscore train. Now I'll say scalar dot fit underscore transform. Okay. And I am passing my X train data. Okay. And similarly, I am doing the same thing for X test, and I am passing scalar dot transform. Now again, a very interesting interview question which can be asked from you. Let me see who will give me the answer correctly in the comment section. The question is, this question have been asked to me at one point of time when I was giving the data science interview in very good company. So they asked me that what is the difference between fit underscore transform and why we are using always fit underscore transform on the training set, not on the test set. Let's see who will be able to give me the correct answer in the comment section. So this is something which we did now. Here, if you will observe, we will be able to get the training and the test data. Now I can apply the linear regression model. So I will say sklearn dot, it's present inside linear underscore model. You can import something called as linear regression. Linear regression. Now, here the model name is something that we have is linear regression. And now what I can do is I will try to fit my data into X train that I have and the Y train that I have. Okay, Y train. Now, once this is done, what I can do is linear regression model is done. I can do the prediction. Y underscore pred is equals to, you can say model dot predict on the test data that I have. If you really want, you can check the predictions that you will be able to get and you can compare it with the actual data that you have. Okay, so this is the actual data. I think Y test we have written, right? So this is what we have as an actual value. So you can create a data frame by saying pd dot data frame, and here you can write something like, actual price, and you can input Y underscore test value. Then you can write, predicted price, and you can input something called as Y underscore, pred, and you will be able to get the output. You will be able to get the output. Now here you can see, right? You will be having actual, you will be having predicted. This is what I am saying as Y. This is what I am saying as Y cap. If I really want to see what is the, residual, what is the R square score with respect to this particular value, you can see that as well. How? You can simply call import, or from sklearn dot metrics, you can import R2 square, R2 underscore score. And here, if you will observe, you can calculate that R squared value by calling R2 underscore score and by passing the value of the actual and the predicted data. So this is the test that I have, this is the pred that I have, and I can see what is the value of R squared that I will be able to get. You can see that. Okay, what is the issue?
Let's see. sklearn.metrics. Now it should be fine. So this is the R square value which I will be able to get here. Okay. What is the, if suppose I really want to calculate, what is the value of model that I have, M value. What is the value of C value? So what you can do is you can say model dot COEF, coefficient underscore. You will be able to get the value of M. So this is the value of M that you will be able to get. Now I will talk about something here. Just wait for a moment. What is the value of C if I want to calculate? Intercept. So intercept underscore. Perfect. So here you will be able to get the value of C as well. This is the intercept. Now you can ask me one question, that these values amazed me. Why there are 1, 2, 3, 4 and 5 values? But in my equations, in my mathematical intuition, I have only talked about one value. Y is equals to mx plus c. Very simple equation. See, how many number of features do I have here which I have taken? 1, 2, 3, 4 and 5. So obviously when you will be having multiple features, what is the equation of line? It will be y is equals to m1x1 plus m2x2 plus m3x3 plus m4x4 plus m5x5 plus c. So if you will be taking a 10 features into consideration, you will be having a 10 values of slope. If you are taking 20 features into consideration, you will be having a 20 coefficients and so on. That's where, let me ask you one amazing question which can be asked from you in an interview. Let's see again who will be able to answer me out. Okay. The question for today's particular session is that you have seen, right? For the features that we have, that means coefficients we will be having. So if someone will ask you how many types of linear or how many types of regression we have, so what will you answer? So I have talked about linear regression. Linear meaning y is equals to mx plus c. Now, how many different types of regressions we have? Try to explore, try to do research, and do let me know in the comment section, what do you think? How many different types of regressions we have? And if we have, what is the equation of that? That would be great if you will write that. Okay. So this is the overall idea that I really want to give here with respect to linear regression. Another interesting question which I have asked you in today's session is that, let's see who will be able to give me the answer, that what is the difference between fit underscore transform and transform. Now see, these answers, those people only will able to give me, those who will watch the session till the very end. And let me tell you, whatever questions I will ask in the sessions, these questions are the interview questions which can be asked from you in an interview. So if you will be able to give me the correct answer for these, there are high chances that you will be easily able to crack that. So at least do a research on these questions and try to get the answers. I'm seriously saying these questions can be asked from you in an interview, right? So with this, let's end this video and I'll see you all in my next video, where now we will talk about logistic regression algorithm. But if you really like this video, I have made a lot of effort in making these videos. Please hit like button. This will really mean a lot to me. And do mention in the comment section the answers of these questions which I have asked. And do subscribe to my channel. And with this, bye-bye everyone. Happy learning to all. And I'll see you all in my next video.